Good morning students. Today I will explain you computer generation. Okay. Computer generation. How many types of computer generation? There are 5 computer generation. Okay. Classification of computer on the basis of generation. To classify computer or technology development that transferred the way computers operate, resulting in more powerful, increasingly smaller, cheaper, more efficient and reliable device is referred to classification on the basis of generation. Okay. There are 5 basis classification on the basis of generation. Classification of computers. First, on the basis of generation, first generation, second generation, third generation, fourth generation and fifth generation. Okay. On the basis of data processed, analog, digital and hybrid. On the basis of size and capacity, supercomputer, mainframe computer, mini computer, mobile computer and microcomputer. On the basis of purpose, special purpose and general. Okay, the first generation 1940 to 1955. Okay, the first generation of computer used vacuum tubes for circuit and magnetic drums for memory. Okay, vacuum tubes. See the picture of vacuum tube, control grid, cathode, glass tube and anode. Okay, this is the picture of vacuum tube. Okay, and this is the picture of magnetic drum. Okay, the first generation computer relied on machine language, the lowest level programming language understood by computers to perform operation, and they could only solve one problem at a time. Punched card and paper tape were used for input and output was displayed on the printouts. Okay, there are some inventions in the first generation. First, Mark 1, the first electromechanical powered computer. In 1944, Professor Howard Ekins built the first mechanical computer named Mark 1. It is used punched card and a typewriter for input and output. Mark 1 was much more reliable than early electronics computer. Okay, see the picture of Mark 1. Okay, see, this is the electromechanical powered computer. Okay, the second invention is ENIAC. That means the first electronic computer. Electronic numerical and computer was the first electronic general purpose digital computer built in 1946 by John Mauchly and Presper Eckert. Okay, see, this is the ENIAC, the first electronic computer, electronic numerical and computer. Okay,
And next invention is UNIVAC or Universal Automatic Computer. Was another successful invention of John Mauchly and Presper Eckert in 1951, which could handle both numerical and textual information. See the picture of universal computer. Okay, see, this is the computer of universal automatic computer. Okay, the features of first generation computer. हग इन साइज मीन्स ये साइज में बहुत बड़े होते थे, वेरी एक्सपेंसिव बहुत कॉस्टली होते थे, महंगे होते थे, मेड अप ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, ये किससे बनते थे? वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक रॉड से. ओके, द नेक्स्ट इज सेकेंड जनरेशन. ड्यूरेशन 1956 to 1964. The second generation of computer used transistors to replace vacuum tube. The transistors was far superior to the vacuum tube, allowing computers to become smaller, faster, cheaper, more energy efficient and more reliable than their first generation processor. The first generation predecessors मीन्स कि जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर होते थे वो किससे रिप्लेस हो गए? वैक्यूम ट्यूब की जगह किससे बनने लगे? ट्रांजिस्टर से. ओके, और ये कैसे होते थे? कंप्यूटर टू बिकम छोटे होते थे, तेज होते थे, कम कॉस्टली होते थे और इनमें काम करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती थी कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन. ओके, computer of this generation generated a great deal of heat that subjected the computer to damage, but it was a vast improvement over the vacuum tube, and they still relied on punched card for input and printouts for output. Okay, assembly languages was invoked during second generation, which allowed programs to specify instruction in words. Second generation computer used magnetic core technology, the first computer that stored their instruction in their memory as against magnetic drum of first generation computer. Okay, see the pictures of magnetic transistors. Okay, this is transistors. Okay, see the pictures of magnetic tape. Okay, the features of second generation. Made up of transistors. Magnetic tape were used to store data, small in size and less expensive than first generation computer, and next is faster and reliable. Means ये ट्रांजिस्टर से बनाए जाते थे. मैग्नेटिक टेप का यूज़ डेटा को स्टोर करने के लिए होता था. ये साइज़ में छोटे और कम खर्चीले होते थे, कम महंगे होते थे फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट, स्पीड इनकी तेज होती थी और ये रिलायबल होते थे. ओके, नेक्स्ट थर्ड जनरेशन. ड्यूरेशन 1965 to 1975. ओके, इन थर्ड जनरेशन the invention of integrated circuits lead to smaller sized computers with better functioning and more storage. Okay, see the picture of integrated circuit. This is the picture of integrated circuit. Okay,
थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में जो इन्वेंशन हुआ वो किससे बनाए जाते थे? इंटीग्रेटेड सर्किट से। इसका साइज कैसा होता था? सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से भी छोटा होता था और इसकी फंक्शनिंग और स्टोर करने की कैपेसिटी अच्छी होती थी और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स की कंपैरिजन तेज होती थी। ओके, integrated circuit developed was the hallmark of third generation of computers. There was drastically increased in the speed and efficiency of computers due to reduce in transistors which was placed on silicon chips, semiconductors. Okay, use interacted with third generation computer through keyboards and monitors as against punched card and printouts. Computers for the first time become accessible to many because they were smaller and cheaper than their predecessors. Okay, third generation computers जो कि इंक्रीज्ड, जिनकी स्पीड क्या हुई? इंक्रीज्ड हुई और इसमें एफिशिएंसी मीन्स जो भी काम होता था वो बहुत ही सरल तरीके से होता था। ओके, और कंप्यूटर्स ड्यू टू रिडक्शन इन ट्रांजिस्टर विच वॉज प्लेस्ड इन सिलिकॉन चिप्स, मीन्स जो ट्रांजिस्टर्स यूज्ड होते थे थर्ड जनरेशन में, इसकी जगह सिलिकॉन चिप्स यानी कि सेमीकंडक्टर्स ने ले ली थी। यूज़र इंटरेक्टेड विथ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर्स। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में कीबोर्ड्स आ गए थे और मॉनिटर्स, अगेंस्ट किसकी जगह? पंच्ड कार्ड एंड प्रिंट आउट्स की जगह। ओके, फीचर्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। व्हाट इज द फीचर्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर? These computers were made of IC. ये कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट से बनते थे। The use of the ICs reduced the size and increased and speed of the computer. इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने क्या किया? इनकी साइज को रिड्यूस किया, स्पीड को इंक्रीज की। ओके, थर्ड, दे वेयर मोर अफोर्डेबल एंड डिपेंडेबल। ये कोई भी अफोर्ड कर सकता था और किसी भी आम इंसान के लिए ये अफोर्डेबल था। ओके, द फोर्थ जनरेशन ड्यूरेशन 1976 to 1985. In 1980s, very large scale integration VLSI came into existence in which thousands of transistors were placed on a single chips called microprocessor. Means ट्रांजिस्टर्स जो कि 1000 ट्रांजिस्टर से मिलकर एक कंप्यूटर बनता था, उस 1000 ट्रांजिस्टर्स ने की जगह हमारा एक सिंगल चिप आ गई, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। आई मीन टू से दैट कि 1000 ट्रांजिस्टर्स की जगह एक माइक्रो प्रोसेसर चिप ने ले ली। ओके, IBM released their first link of desktop PC personal computer which was used by Intel. ओके, किसने यूज़ किया? इंटेल। ओके, 888 चिप्स आर देयर CPU. इस CPU के अंदर कितनी चिप्स थी? 8088. In 1983, IBM introduced the PC XT, which had more memory and more hard drives space. In 1985, Microsoft released the first version of Microsoft Windows. Okay, see the pictures of very large scale integration. Okay, ये क्या है? हमारा माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर? द फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन। सी
the computer of fourth generation. Next, features of fourth generation. VLSI called microprocessor invented. Okay, small in a size and could place on a office table. Hard disks to store data. Introduction of GUI operating system. Okay, VLSI को माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंटेड. ये साइज़ में बहुत ही छोटे होते थे. ये इतने छोटे होते थे कि ऑफिस टेबल पर ये आ जाते थे. ओके, डेटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का यूज़ होने लगा. ओके, और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए GUI को लॉन्च किया. ओके, नेक्स्ट जनरेशन एंड लास्ट जनरेशन इज फिफ्थ generation computer. Duration 1986 to now present. Okay, after 1986 VLSI technology was used to develop more powerful microprocessor to improve the speed, size, cost, performed of computer. In 1997, Intel introduced the MMX microprocessor, which were designed to improve game and multimedia perform. Okay. Scientists are still trying to develop computers with artificial intelligence (AI), developing computing device that responds to natural language input and are capable of learning and self-organization. Okay, see the pictures of fifth generation. This is the laptop and this is the desktop. Okay, features of fifth generation will use artificial intelligence, improve size, cost, speed and performed. New version of GUI operating system are developed. Okay students, your first chapter is complete. Innovation of computer and computer generation. Thank you so much.